As the 2021 Assembly elections draws closer, attacks on BJP workers by the TMC cadre have grown more rampant. BJP attacked Mamata Banerjee over the law and order situation in the state, whereas West Bengal governor has also expressed concerns over the worsening situation. Our next report gives you all the details. After the violent killings of several BJP workers in the state and the attack on BJP President JP Nadda's convoy during his visit, BJP has slammed the Mamata-led government for the deplorable law and order situation in West Bengal. ममता दीदी ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी की कार पर हमला करवाया है, पत्थर फेंकवाए हैं। ये कायराना हमला है। ममता दीदी, नड्डा जी की गाड़ी पर फेंका गया पत्थर बंगाल में टीएमसी के कफन में अंतिम कील साबित होगा। न बंगाल ये हमला बर्दाश्त करेगा, न देश ये हमला बर्दाश्त करेगा। आज ये स्थिति देखे हमारे মনে হচ্ছে বাংলায় ইমিডিয়েট প্রেসিডেন্টস রুল ইম্পোজ হওয়া উচিত। এখানে আইনের শাসন নেই, এক্ষুনি রাষ্ট্রপতি শাসন হওয়া উচিত, বাংলায় প্রেসিডেন্টস রুল হওয়া উচিত। সেটা তো আমরা আবার বলছি, আমরা গণতান্ত্রিক উপায় জিতবো, কিন্তু बंगाल का जो सिचुएशन है वो अभी प्रेसिडेंट्स रूल का सिचुएशन का मुताबिक है। West Bengal's governor has also expressed concerns over the situation in the state. We have a constitution that provides for all kinds of situations. I have had the occasion to see this communication, which is in public domain now. I feel sad at it. It is high time we look to spirit and essence of Indian Constitution. Our actions must be full of sublimity. Meanwhile, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has played down the attacks on BJP workers by her party cadre. As the state readies itself for elections next year, what remains to be seen is whether the people of West Bengal reject the politics of violence. Bureau Report, Republic TV.